जैसा कि आप लोग ने देखा, आज हम दो डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं. वन डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो साइंसेज एंड द अदर इज द फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट. At the beginning, let me tell you that it's not easy to create a new department within a functioning hospital. So for that, I want to congratulate my entire team for getting this whole thing done. And also to all our doctors who've been waiting patiently for a very long time to see this department shape up. And like we all saw today, I'm sure you'll all agree with me that that wait has been well worth it. So now when we look at these two departments, आप सोचेंगे कि ये दो अलग डिपार्टमेंट है, इनका क्या मेल है. You're right, ये दो अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इनमें एक समानता है. और वो समानता ये है कि दोनों डिपार्टमेंट का जो हमने डिज़ाइन किया है वो पेशेंट के मद्देनज़र रखते हुए हमने वो किया है. सो वी हैव केप्ट द पेशेंट इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग टू डू विद दिस डिपार्टमेंट. And that I would say is not limited just to the design and the interiors which you've already seen, but also going beyond that into the whole way the services have been arranged and the patient flow will shape up. So that in that. और अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में जैसे मेडिकल साइंस में एवोल्यूशन हुआ है, हम जिस तरह से बीमारियों का इलाज करते हैं उसमें बदलाव आया. तो पहले जो चीज़ ठीक करने के लिए हमको बड़ा सर्जरी करना पड़ता था, आज वही चीज़ छोटा स्मॉल इंसिजन या मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं. उसी प्रकार से पहले कई बीमारियों का जिनके लिए हमको सर्जरी करना पड़ता था, आज उनका बिना ऑपरेशन के इलाज हो जाता है. सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ द एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट वर्क्स. वो दूरबीन के माध्यम से हम कई सारी बीमारियों का सिर्फ डायग्नोसिस जांच ही नहीं कर सकते, पर उनका हम इलाज भी कर सकते हैं. एंड इफ यू लुक एट कैंसर, द हार्श रियलिटी टुडे इज दैट द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज राइजिंग इन आवर कंट्री. So that puts a lot of strain on everybody. And to add to that, one is being suddenly hit by the news that you're suffering from an illness like cancer. The other thing is then having to immediately worry about what will happen to my family, how do I arrange the finances, where do I go, what do I do. So I think that is something we have tried to address in the whole department that we've created. There's one stop which covers everything. So right from the time, जैसे आप लोग ने देखा होगा, from the time the patient enters, there's someone who will accompany the patient all through the journey, the consultation. You need any treatment done, you've got the daycare unit there, medicines required, again the pharmacy there itself can dispense all of that. And it doesn't just stop at the medical treatment, because what we call is there's that outer ring of that which nobody looks at. So along with that, we've got a dedicated counselor, a psychologist who helps you with all of this. We all know nutrition plays a very important role in the recovery. So we've got a dedicated onco nutrition department. We'll have a genetic counselor who helps you to figure out what can be done and what the exact treatment should be for that particular disease. And then again, it doesn't stop there. It moves on to the rehab. It moves on to the prosthesis store that we saw. So what we've tried to do is cover everything the patient and their family would require. So with this, the aim of the hospital is we've always strived to wanting to have a bigger impact on patients' life. और ये डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट खोलने के लिए भी हमारा मकसद यही था कि हम जितने लोगों के जीवन में सुधार ला सके, हमको लगेगा हमारी मेहनत सब सफल हो गई. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन. थैंक यू. A very warm welcome to all of you all. A very warm welcome to Ms. Mahima Chaudhary for being here with us. It's actually been very wonderful इनके साथ interact करके. हम जो हम इधर facility दिखा के इनके साथ जो बातचीत हम कर रहे थे, it's been a wonderful experience having you and interacting with you. So coming back, it's a very, very proud day for Fortis Mulund today, because we have 23 years of legacy of clinical excellence. 23 years have we been focusing on good clinical work. More than good clinical work, it's also about compassion, creating trust, and a very big focus on community health. हर टाइम हम जब नया एक स्पेशलिटी का सोचते हैं, हम ऐसे ही कोई स्पेशलिटी में नहीं स्टार्ट करते. हम कम्युनिटी में जो रिक्वायरमेंट है, आज के दिन में कौन सा डिजीज का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो सोच के हम हमारे स्पेशलिटी को बिल्डअप करते हैं. हेल्थ केयर में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, आप सबको मालूम है. हेल्थ केयर बहुत डेवलप हो चुका है, डिजीजेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, पेशेंट्स
एजुकेटेड हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। तो ऐसे टाइम में हमारा जो स्टेप है, हम री इमेजिन कर रहे हैं हेल्थ केयर को, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ओपन दिस इंस्टीट्यूट ऑफ Fortis Institute of Cancer and Fortis Institute of Gastro-Sciences, जहाँ हम सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट करेंगे। It will be a comprehensive, holistic approach to diagnosis using the best of technology, a multidisciplinary expert clinical team who will work together to treat the patient and not just the disease, and clinical care with a human touch. आज के दिन में more and more specialties are becoming very customized, very patient specific. So हमारा endeavor इधर यही होगा कि हम जो treatment दें as far as possible patient के लिए customize करके दें। तो जो treatment मेरा होगा वो treatment आपका होगा, उसमें अलग होगा, पर all expertise will be used to make it customized, and all other support services to make sure that patient comprehensively treat होता है, सिर्फ disease का cure नहीं होता है। यहाँ पे best technology, best doctors, best support system, best infrastructure। हमने बहुत कोशिश की कि patient cancer या कोई भी disease से डरे नहीं, वो आए उनको ये ना लगे कि hospital में आना एक burden है, irritation है। एक एनवायरनमेंट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो आए, दे आर एट पीस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली टेकन केयर ऑफ, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस, while we would focus on clinical excellence, while we'll focus on innovation to bring the best with precision oncology, robotic surgical care, हम हर मोडालिटी को पेशेंट के जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहेगा, ये एक हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करके पेशेंट वाइज उसको ट्रीटमेंट देगा। Further, very big focus which we already started is on preventive health care. So whether it is gastro-sciences or oncology, there will be a very big focus on prevention of diseases, so that educating the community and doing preventive care, we try and reduce as much as possible the disease burden. So we have taken a very big step today in partnership with our clinicians and the entire team which works in this hospital, and our entire focus and pledge is to make this facility available to more and more in the community and provide the best of health care. Thank you, Dr. Narayan, for that. She truly symbolizes strength, positivity and hope. Over to you, ma'am. Good afternoon. I'd like to thank Fortis Hospital for making me part of this wonderful journey of healing people. Dr. Boman, Dr. Berry, Narayani, and of course Dr. Rathore. It was wonderful to take the tour of the establishment. And yes, Fortis is known for so many years, for 23 years, for their treatments. But what I saw today, हम सब लोग यही सोचते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली हमें इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर बहुत भरोसा है। अगर किसी की तबीयत सिंगापुर या बाहर विदेश में भी ख़राब होती है तो हम इंडियन डॉक्टर ढूंढते हैं, हमें लगता है वी आर इन सेफ हैंड्स। तो सबसे पहले तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स ऑफ कोर्स कमाल के हैं। तो दूसरी चीज़ हम यही सवाल पूछते हैं कि अगर अब इतना नॉलेज है तो सब इतने ज़्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इस हॉस्पिटल में वो चर्चा शुरू हुई है, प्रिवेंटिव, वो आपको समझाएंगे। एंड आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड टेक दैट क्लास कि किस तरह से स्वस्थ रहें, स्पेशली आज के टाइम जब हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स कमर्शियल हो गए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बात कर रहा है कि हम आपको एडुकेट करेंगे कि आपको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही ना पड़े। आई थिंक ये बहुत बहुत बिग एग्जाम्पल है ऑफ द वर्ड कंपैशन, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जो ये हॉस्पिटल चाहते हैं। और एक और चीज़ होती है जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब कोई भी बीमार होता है तो
जब हमें इस बिलिंग काउंटर पे जाना पड़ता है और दूसरे फ्लोर पे कोई और रिपोर्ट लेके आना पड़ता है और फिर वो बोलते हैं ये तो आ गई लेकिन वो फला रिपोर्ट वहाँ मिलेगी, वहाँ से लेके आइए, और एक और टेस्ट है आप अपने पेशेंट को नीचे ले जाइए, उसमें बहुत वैसे ही आप इतने घबराए हुए होते हैं, इतने तकलीफ में होते हैं, तो टू हैव समबडी इंटेलिजेंट, capable, with a lot of time in the family to be attending to the patient takes a lot of toll on the family. And I really congratulate Fortis on this beautiful, जैसे आपने कहा कि एक functional hospital में ये काम करना और फ्लोर बनाना गैस्ट्रो और ऑन्को का बहुत डिफिकल्ट है और बहुत प्यारा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है और बाकी चीज़ों का भी टेक केयर किया है। मुझे भी अब बहुत सारी लेडीज़ फ़ोन करती हैं और उनका भी पहला सवाल या दूसरा सवाल यही होता है कि आई हैव बीन डिटेक्टेड एंड कैसा होता है और कीमो, और फिर बाल का क्या करें, वो आपने विग कहाँ से लिया ज़रा मुझे बताइए। सो आई थिंक ये सबका दूसरा सवाल तो होता ही है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आप जैसे सोचते हैं आपके बदन को बहुत फर्क पड़ता है। अभी येस्टरडे ओनली मैंने एक रिसर्च पढ़ा जहाँ पे जो होटल्स में हाउसकीपिंग का काम करते हैं उनको बोला गया कि आपको पता है एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। उन्होंने कहा हाँ लेकिन हम तो पूरे दिन काम करते हैं और एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, वी आर टायर्ड, वी गो टू स्लीप। उन्होंने रिसर्च में 2 ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप को बताया कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए ब्ला ब्ला, दूसरे को बोला आप जो कर रहे हो काम वो एक्सरसाइज है। जिस तरह से आप बेड शीट्स लगाते हो, सॉरी, जिस तरह से आप बेड शीट्स लगाते हो, बकेट्स उठाते हो, नीचे बैठते हो, ऑल दैट इज एक्सरसाइज। और बाद में जब उनको वापस दे एग्जामिन्ड देम, देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन देयर मसल, their waistline had improved. So when you think you are doing something, you are healing yourself, you always heal. So the way the doctors talk to you and the way the therapists talk to you, and if you have help of therapists right there, and the hospital doesn't look like a hospital, it looks very pleasant and you will definitely heal. So my best wishes to everyone who is going to be here for treatment. I hope and I pray that all these efforts bring joy and a lot of healing to everybody's lives. And thank you once again for exposing me to these wonderful facilities here, and I wish you all the best. My colleague Dr. Bhaman, my friends and colleagues here. Gastro sciences. I always tell people that people have heard of heart disease because they feel if the heart stops, then we are gone. But they forget that there are 7-8 organs where the probability of something going wrong is very high, and they are not aware about it. I see patient with pancreatitis and they say ये pancreas क्या होता है? मतलब यही तो problem। लोगों को heart के बारे में पता है, पर pancreas के बारे में पता नहीं है। So we are trying to create a massive awareness campaign, as ma'am also said, that cancer prevention is the only way to cure cancer. And we are looking at preventive gastroenterology. I call preventive gastroenterology, not just cancer, acidity, gas, indigestion, so many other digestive problems. All this can be avoided provided you bring some amount of awareness. And as Mahima ji has mentioned, the way the gastro science and the onco department has happened is the ambience, the technology, the infrastructure, the innovative spirit in the whole team that has a lot to do, and life happens because of ambience. You have to understand that. You put a seed on a rock, nothing is going to happen. You give the right environment to that seed, and you will see something blooming beautifully.
So it's about life happens because of ambience. And I think this is what we are trying to take forward. This will be a center of excellence, and I always say excellence is not the goal. Excellence is the baseline. We start at excellence. Okay? So that's the way it goes. Secondly, most importantly, as ma'am also said, with a human touch. I think what has happened is that people have forgotten that they are treating a patient who is a human being, not just an IPD or OPD number. And this is how most hospitals are operating, unfortunately. So we need to bring about that personal touch, and I'm sure our team will definitely help us there. We also look forward to making this particular hospital as a beacon of education and training for the whole planet, not just Mumbai, India or Asia. So in gastro sciences, we will be beaming live some of the procedures and some case capsules, which will be educative material for doctors all across the world. And this is where I'm thankful to Dr. Narayani. When I joined this hospital about 2.5 years ago, she promised me that yes, we will come out with a state-of-the-art GI institute, and I'm extremely thankful. From what happened with me was my diagnosis happened because I always do my tests yearly, and that is part of preventive medicine that doctors are talking. कि आप अपना सालाना अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको जल्दी पकड़ में आएगी कोई भी बीमारी, और उसका इलाज फिर बहुत छोटा होता है और ज़्यादातर के उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. तो मैं सबसे कहूँगी कि सबसे पहले तो आई थिंक 90% लोगों को पता है क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी नींद होनी चाहिए. उसके साथ साथ जैसे आप दिन में अपने 50 सेल्फीज लेते हैं, ऐसे अंदर का भी एक फोटोग्राफ लेना, आपके बदन के अंदर क्या हो रहा है वो लेना, सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके एक एज के बाद. तो आई थिंक मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे सामने आती है वो यही है कि मेरा डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी हुआ. थैंक यू. Hello. My question is regarding gastro. See, if I have a doubt about my liver, see, because of some test I have done, see, if I then write to Fortis Hospital, is there any provision to confirm the healthy or otherwise any issue? How much it will cost for preliminary tests? Yeah, so it's a very important question. In fact, I saw yesterday a very educated, central government service personnel who has been having abdominal problem and all of a sudden started having some swelling on the feet. And she was treated by physicians across Mumbai, different parts, but nobody thought of doing a sonography. She was actually having end-stage liver disease, and the last time when they detected a swelling in the feet, is already an end-stage liver disease. So what I'm trying to tell you is that liver disease, if you're suspecting, especially with a history of any liver cancer in the family, number one, patients who have excessive alcohol consumption, patients who have high body mass index, high fat intake, and they should, after the age of 50, should get some basic investigations done, including liver function test and an ultrasound, a sonography of abdomen. And you will be able to pick up all those cases of grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver, and early cirrhotic changes. And with Dr. Narayani and the whole team's leadership, I am very proud to say we have a fantastic liver transplant unit in Fortis Hospital. It is one of the finest in the country. And I think this is something which people should first come forward, as Mahimaji mentioned, detection of early problems. And that you can do with liver diseases also. So don't consider everybody, if you don't have, see, absence of pain does not mean absence of disease. So ये concept ही अलग है, especially in malignancy, I'm sure. Yeah. Dr. Bauman will agree with me.
that most cancers will start without pain. So you need to be aware. I want to make one more point here. I know it is little out of the context of liver. Colon cancer. In the world, colon cancer surgery, elective surgery for colorectal cancer has gone down by 50% in last 1 decade. You know what is the reason? Early detection of colon cancer by colonoscopy. So you pick up small polyps, you take out these polyps at the same time. It's an endoscopic surgical procedure, and you avoid a cancer. This is the future. This is the future for the cancer of the food pipe, stomach, and colon and rectum. So I think this is the community awareness is very, very important. So I am making an appeal to all of you today. Anybody in your family who has a history of colorectal cancer, their siblings first should undergo a screening colonoscopy. If the father who develops at 60, 65, you have to minus 20 years, and their children has to undergo a screening colonoscopy at 45. Now, this is a message I want all of you to pass across the nation. This is what is required. So, this is what we are talking of preventive gastroenterology and preventive oncology. Yeah. If a person has considerable decrease in vitamin D, does it have any indication that it may have? So, in Mumbai-like city, majority of the people have vitamin D deficiency, and the reason is why we live in tall buildings. There is hardly any exposure to sunlight. Most people in Mumbai they have late night working. Nobody wakes up at 7:30 to have exposure to the terrace or sunlight. So vitamin D deficiency, I would say, I don't have the data with me, but ballpark 70-75% of the population of Mumbai, which I see in my practice. They all are D deficiency and different vitamin D as well as vitamin B12. If these two deficiencies are there, you can expect a lot of problems. It also includes hormonal changes. It includes osteoporotic problems. It can include high blood pressure and so many other problems can occur apart from digestive issues. So yes, I want all of you when you do a health checkup, at least get this B12 and D3 part of the workup. Yes, it's a very good question. Thank you. Can I have a comment? Yeah, it's a, you can take it as a comment for the media from, I'm a cardiologist, but also cancer survivor. One thing common between madam and me. 2005, I had blood cancer, acute myeloid leukemia, and the textbooks mention that life survival is 2.5 years. Now 20 years past, I'm still alive. Oh, wow. Just two things for the media I wanted to say, just to congratulate Madam Mahimaji. And she said that the treatment in India many a times is much better than the abroad. And I experienced that. In fact, I developed blood cancer when I was studying in Philadelphia, Ohio, which is one of the best cardiac institutes in USA. But I came back to and came here not just because my friend and classmate Dr. Rajan Bagri was the director of Tata Cancer, but because I knew that Indian doctors are better. My treatment was started and then I talked to my dear friend who is a onco physician in Philadelphia, and he said, Rajiv, you are not getting the right kind of treatment. You are getting oral treatment, you are getting this any corner of USA, you go from this corner to that corner, you just get 3+7 standard treatment of hydroxyurea and then doxorubicin. You are getting something wrong. But later on I came to know that when I came here, I was so bad. I had pneumonia, I had blood cancers, I had no fighting cell, what is called as neutrophil or white cell in the body. All were blast cells, which are in the cancers. So what I was given was a very precision treatment. Dr. Bowman never said, we work for precision, we go for the patient friendliness. We look at the patient, what he will bear with, what can accept as a treatment. And then I was given a kind of treatment which was just a mild treatment to, to bring up my, go down the blast cells, bring up the fighting cells. In the meanwhile, my pneumonia get cured. And then this kind of treatment was not possible in US because they go by guidelines. If you don't give the treatment what is in the guidelines, they can restrict it. But here we have faith in the doctors that what Dr. Bowman is saying
he must be thinking good about it. So that is the difference between foreign countries and our countries. And then that's why our doctors can also do better because of the fact they do little go out of the box to think and give the treatment. And I got the right kind of treatment, and 20 years down the line, I'm alive. I'm still doing interventional work in cardiology. So that is thanks to Indian doctors and Indian Nice, nice, nice. Hi, this is Hema from Bharatwal. I have a question for Dr. तो कैंसर में अवेयरनेस है वो इतना अभी तक नहीं है क्राउड में वी डोंट सी दैट मच अवेयरनेस व्हेन आई वाज वर्किंग इन सायन हॉस्पिटल एज अ रजिस्ट्रार छोटे छोटे बच्चों को टेस्ट पे निकाल देते थे हम बोलते थे मुझे सर हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना दैट वाज अवेयरनेस पीपल हैड 30 years back means every admission I used to get 7 patients with some not very cardiac problem but which are chest में निकाल देते we used to keep them for observation तो वैसा था here patients come to us at this age also and at this stage also occasionally of course now much less than what I used to see earlier huge breast masses huge diseases extensive metastatic disease so education is very very important as Dr. Mathur told us pain है उसका मतलब disease नहीं छोटा सा डिफरेंस में पेन है ऊपर है पेन है यहाँ कुछ किया ही नहीं हमने इतना अभी पेन होने में इसके लिए आए तब तक तो बहुत एडवांस हो जाता है so patient education passing the message that oncology is also very important. I would think as a student life, they should have some sessions of education in health medicine where they should be told what is this, how things can be prevented, what are the screening procedures. These actually can make a whole change. Of course, our oncology treatment has made a big change, but it has not eradicated the disease very times. It has some stage 4 maybe both patients we have cured, we have done so much good work, and this is all because of this exact treatment for the right patient at the right time, as Dr. Kanik told us. So here we of course go out of the way to treat what is the best for the patient. We try to do this in India. In India we can do that. I have worked in many countries. I have worked in Kuwait. I have worked in USA. I was there, where things are totally different. But trust this, all these things we can see only in India. Patient education is a basic thing and the recent advances. Immunotherapy has changed the outcomes of this disease we have seen. Immunotherapy where 20% of the lung cancer will survive more than 5 years. This is the data which we have never seen in our life when we were 30 years back. We have never seen one of this. Thank you. से काम चलेगा या और भी आगे रिवील करनी चाहिए मैं तो चाहूंगी कैंसर केसेस हो ही नहीं किसी को तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि और रिबन नहीं काटने पड़े रिबन जोड़ना है हाँ रिबन जोड़ना है बट आई थिंक कैंसर केसेस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन मुझे लगता है हर चीज में चाहे वो हमारे सांस लेने में पोल्यूशन है खाना खाने में तेल में और हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कोई भी सुबह 6 बजे नहीं उठता सूरज के पास नहीं जाता सनलाइट नहीं मिलती कोई भी आई थिंक 12 से पहले सोता नहीं है तो हम लोग जो लोग पहले कर रहे थे हमारे माता पिता जो कर रहे थे उस तरह से कोई नहीं जी रहा है आज बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी लेट नाइट तक पढ़ते हैं गेम्स खेलते हैं सोशल मीडिया पर हैं टीवी देखते हैं दूरदर्शन बंद हो जाता था 7 बजे शुरू होता था आई थिंक 9-10 बजे बंद हो जाता था सो देयर वाज नथिंग टू डू सो वी वेंट टू स्लीप सो आई थिंक हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है सो देयर आर लॉट मेनी केसेस अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे आई थिंक इट विल कम डाउन एंड वी विल नॉट नीड टू ओपन मोर ऑन्को सेंटर्स होपफुली मेरा एक सवाल है नारायणी मैडम से कि जैसे आपने कहा कि पेशेंट जब यहाँ आता है तो बीमारी से घबरा जाता है डर जाता है तो आज ऐसा होता है पेशेंट बीमारी घबरा से नहीं डरता है खर्चे से डर जाता है तो आप हॉस्पिटल से कैसा कितना किफायत रहेगा हॉस्पिटल ये जो सवाल है इसका मैं आपको जवाब ऐसे देती हूँ कि ट्रीटमेंट हम चाहते हैं कि पेशेंट को बेस्ट मिले हम फोकस हमने जैसे मैंने पहले भी बोला हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे प्रिवेंशन में ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और डिजीज ना डेवलप हो लेकिन अगर किसी को आ गया हाँ जरूर है कि पेशेंट को फाइनेंशियल चिंता होती है पर हम इस बात का अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम
बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कहीं भी आपको मिल सकता है देंगे एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि फ्री ट्रीटमेंट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब कुछ डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो बोलना सही नहीं रहेगा। हम बेस्ट के लिए जब चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन ये हमारा अश्योरेंस है कि जो पेशेंट को लगेगा कि जो खर्चा हुआ वो उसमें बहुत वैल्यू मिला और लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। और ये हर चीज के लिए जब हम बता रहे हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग भी हम पेशेंट के साथ बैठ के उनको समझाएंगे कि कैसा ट्रीटमेंट है, कितना खर्चा आएगा, ताकि वो उसका भी वो प्लानिंग कर सके, तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। हम सब सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हो रहा है। आपको पता है कोई भी गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते अगर उसका इंश्योरेंस नहीं लिया है आपने, वो जुर्म है। लेकिन हम लोग चल फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। किसके पास इंश्योरेंस नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना? नहीं है? हाथ ऊपर उठाओ। क्यों नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में तो फायदा किसी और को होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपके काम आएगा। प्लीज जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया लीजिए। अभी तो हमारी सरकार ने भी कितना आई थिंक 5 लाख तक का किया है। सो प्लीज एवरीबडी या प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। डोंट थिंक कि मैं प्रीमियम भरने से मतलब इतना प्रीमियम नहीं होता। प्लीज आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए जिसने भी नहीं लिया है। Hello, I'm Dr. Sonal Tumka. I'm a gynecologist, and since we're talking so much about preventive healthcare, I'd like to say that I look after the preventive healthcare department in Fortis Hospital since last 22 years. I've been seeing the gynecology part of it, and I get to see patients every single day. And even today, with so much of education, very often when we ask the patient, she's not doing a breast examination. You know, so I believe that yes, we will have the best cancer treatment, and we have it in our institute. But we need to do what is called as downstaging of cancer.